3.23. Mr. A will need rupee 1 lakh after 2 years, for which he wants to make one-time necessary investment. Now he has choice of two types of bonds there. Details are as below. Right, bond X and bond Y. Face value 1000. Coupon is 7%. Payable annually, and दूसरा भी 8% payable annually है. Years to maturity 1 year, 4 year. Again weighted average duration अपन को टाइम होराइजन, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के साथ मैच करना चाहिए. दैट्स द सेम आइडिया दैट्स इन दिस सम turned up in November 2015 for 6 marks. राइट, अब बोलोगे सर सिर्फ 6 मार्क्स. हाँ, क्यों? ज्यादा कुछ है नहीं इस सम के अंदर, कारण कि आपको प्रूविंग नहीं करना है. बेस्ट पार्ट ऑफ द टेल इज राइट. करंट प्राइस दिया गया है, करंट यील्ड दी गई है. Advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of bond or should he buy both the bonds, and if so, in which quantity. Assume that there will not be any call risk or default risk. In short, there is no unsystematic risk involved, right? Organization specific risk नहीं है, वो assume करके चलना है, वही assume करके कर सकते हैं. That risk cannot be technically tabulated, right? 3.23 we begin with our answer. गिवन में क्या है? Investment time horizon 2 years. Right. Amount required at end of 2 years. कितना अमाउंट रिक्वायर्ड एट एंड ऑफ 2 years? रुपीज ठीक. 2 बॉन्ड अवेलेबल है उनके पास, राइट. उसकी सारी जानकारी नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा विल कम टू द बिजनेस पार्ट ऑफ द डील. Advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of bond or should he buy both the bonds. In order to immunize against systematic risk, Mr. A has to ensure that the weighted average duration of the bond or bonds should match with his investment time horizon. Thus, we need to first find out the duration of both the bonds. So in case any one of them has 2 years, yes, he can directly invest into that and there is no requirement of mix and match. See, both are coupon bonds, right? So 0 coupon bond की life of the bond जितनी ड्यूरेशन होती है, इट इज सेम ड्यूरेशन इज लाइफ बॉन्ड, बट दीज आर कूपन बॉन्ड्स.
सो ड्यूरेशन वुड ऑब्वियसली 1 ईयर के केस में तो 1 ईयर ही होगा, सीधा सीधा देखकर हिसाब मालूम पड़ जा रहा है, राइट. And because everything is happening, all the cash flows are happening at the end of 1 year, so it will be kind of treated like a ZCB, right? But more than 1 year, obviously the answer will not be 2 years or 3 years, it will be slightly less, right? कभी भी bond life से exceed नहीं कर सकता है duration. It has to be maximum to the extent of bond life, right? It cannot exceed that. Now उसीलिए ZCB का मैक्सिमम होता है, हम लोग बोलते हैं ना. अगर बॉन्ड लाइफ नहीं है, यस, बॉन्ड लाइफ मानो इन्फिनिटी है, नहीं है मीन्स इफ इट इज इनफाइनाइट देन यू कैन यूज 1 + YTM by YTM as a mechanism to figure out the, you can say, duration of the bond. But any which ways, whatever be the bond life, infinity or a given number, right, बॉन्ड लाइफ से एक्सीड नहीं करेगा, राइट. वो हमेशा याद रखना, ड्यूरेशन वुड नॉट एक्सीड द बॉन्ड लाइफ. Any which ways, there so many observations done till now, still reiterating. So over here 4 years, 8% payable annually. So obviously इसका भी चक्कर थोड़ा अलग हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी ड्यूरेशन निकाल लेते हैं. So क्या है, बॉन्ड एक्स एंड वाई है, क्या नाम क्या रखे हैं इन्होंने, नामकरण देख लेते हैं. बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई. बॉन्ड एक्स बड़ा सिंपल है, फिर भी करते हैं, चलिए. ईयर्स एक मात्र, राइट. कैश फ्लो 7% था तो 1070,000 टुवर्ड्स, यू कैन से प्रिंसिपल. आपको 1 करके 2 अलग स्प्लिट करके करना है, 70 and 1000, यू कैन डू इट, राइट. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हैव दे गिवन इन द सम, बहुत जरूरी है, ठीक है. नहीं दिया तो हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे. अब 19091. $972.74. राइट, 7374 जितना आया, 737 है. देखिए नंबर मैच हो रहे हैं एकदम. ये आ गया हमारा x, सॉरी ये w है, x तो उस तरफ है. अरे रामा, इस तरफ, हाँ. या फिर आपको इसको 972.73 भी लिख सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है. इसका ड्यूरेशन तो मैच होने से रहा, जैसा हमको पता ही था, राइट. बट द अदर बॉन्ड इज 4 years. इज देयर अ चांस दैट इट विल हैव अ गुड ड्यूरेशन? दो बातें होनी चाहिए. एक, दैट द डिस्काउंटिंग रेट हैज टू बी रियली हाई, राइट. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्काउंटिंग रेट हैज टू बी रियली हाई. इफ द डिस्काउंटिंग रेट इज रियली हाई, initial cash flows will get more weight, and hence the multiplying factor during the initial years, the weightage would be greater, thereby it will have a shorter duration, right. एक वो होना चाहिए. दूसरा, the initial cash flows have to be really thick and large in order to shorten the duration of the bond, right. But I don't see any of these things happening because the current yield or the discount yield, लोग फिर से current yield नाम यूज कर रहे हैं. यहाँ YTM या डिस्काउंटिंग रेट लिखा होता तो ज़्यादा परमिसिबल लैंग्वेज होती है, इट विल बी बेटर, राइट, टू यूज सच लैंग्वेज ओवर हियर. बट एनीवेज, जो लिखा है लिखने दो इनको. बॉन्ड वाई, डबल करना है, डबल नहीं तो सिंगल में करो, चलेगा. कैश फ्लो $1000,
छोटी सी गड़बड़ एफ पीवीसी एफ तो यहाँ आएगा। चलिए फिर क्या आएगा 66.112 60.104 54.64 कितना है मालिक? $936.584 इनका क्या आया भाई? 936.52. So that will be on account of rounding off issue. और कोई कारण नहीं दिख रहा है, इतना छोटा 0.0506 का डिफरेंस है। 936 right, I'll keep it to this, only 2 decimals, so we are there, done। तो शायद इन लोगों ने 3 डेसिमल लेकर किया होगा। यू कैन ट्राई विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 3 decimals, then that can give you an answer. Doesn't matter much, right? I've taken 4 decimals over here, so almost it's one and the same। XW चेक कर लेते हैं क्या आएगा। Zero 4 into 3 80.312 to 18.56 2732। ये बाद में आप फिर फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई कष्ट वाली बात नहीं है। सारा इरेज हो गया। Triple 335.824 335 duration (3.562 ड्यूरेशन। तो ये भी हमारे 2 साल के टाइम होराइजन के साथ मैच नहीं हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, मिक्सिंग एंड मैचिंग, दैट्स द ओनली वे आउट नाउ। As the duration of bonds do not match with
the investors' time horizon then तब क्या करेंगे अपन मिस्टर ए in both the bonds दोनों को मिक्सिंग मैचिंग करना है अपन ने देख लो लेट द percentage of investment in bond XBW and in YB right. 3.562 right. इक्वेशन सॉर्ट कर देंगे मालूम पड़ जाएगा कितना किसमें पैसे जाना है. .6097 रफली 61% के आसपास राइट. कितना होगा बॉन्ड बाई में इन्वेस्टमेंट वुड बी 39.03%. ठीक है 1 माइनस डब्ल्यू amount of investment to be done today nothing but present value of rupees 1 lakh that we are going to receive at the end of 2 years at current interest rate, assuming the current interest rate prevails. $82,644.63. ठीक इसमें से so we'll invest 82,644.63 which will grow at 10% for 2 years fetching us 1 lakh rupee. That is what we aspire to achieve, right? But how much would go out of this 82,644.63 to bond X?
5388.43। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा मालिक? नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे हैं। एडवाइज मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड और ही शुड बाय बोथ द बॉन्ड्स, बोल दिया। एंड इफ सो इन विच क्वांटिटी। यूनिट्स पूछे हैं। अज्यूम दैट देयर विल बी नो डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। तो यूनिट्स पूछे हैं, इतना ही है सम के अंदर। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बॉन्ड एक्स टू बी परचेज्ड, कितना प्राइस था भाई मालिक? 972.73। $51.80 यूनिट्स। और से 2 यूनिट्स, ठीक है। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड वाई, कितना मालिक? $644.63। ठीक। $32,256। Number of units of bond Y कितना आएगा? प्राइस 936.52। $34.443 और से 34 यूनिट्स, ठीक है। सम समाप्त। टेक्निकली देखा जाए तो अब सम कर लिया हमने, खत्म, क्योंकि यही पूछा था। एडवाइज मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड, नो, दोनों में डालना है, ठीक। एंड इफ सो इन विच क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स भी बता दिए, बात खत्म। आ गए आपके मार्क्स। ड्यूरेशन के लिए फॉर्मूला यूज करना है, कर सकते हो, राइट। सर आप क्या कर रहे हो? ये पूछा नहीं है सम में, सम एंड ओवर हियर। ठीक है,
कितने मिलेंगे? 1070 रुपये, 1070 into 1.10, because we'll get this at the end of 1 year, then thereafter we'll reinvest it for 1 year. 2 year हमारा टाइम होराइजन है। हाँ जी ठीक है। बॉन्ड वाई में क्या सीन है? बॉन्ड वाई में we'll get 80 which he can invest for 1 more year. End of second year again he'll get 80 which he cannot invest further. The end of year 2 he needs to sell the bond after receiving the interest amount. So value of the bond, the person to whom you are giving the bond would obviously try to figure out and fetch out a price. That's nothing but at the end of 2 years he would be getting twice 2 times 80 rupees and 1000 bucks, right? Redemption at face value assumed. So 1080 and आ गया सेलेबल प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, हो जाए प्लस ठीक है। Obviously the bond is currently running at, you can say, value lower than the face value. Reason is very basic. The discounting rate is greater than the coupon rate. Obviously the bond would be trading below the face value. As time approaches it will start reaching the face value. So over here we notice a distinct increase in the price of the bond, right? ये प्राइस पे हम लोग बेच पाएंगे इसको, रीइन्वेस्टमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, बिकॉज वी रिक्वायर द मनी नाउ। 89 राइट। टोटल क्या बन रहा है? जल्दी 1177 bond X, $1133.289, फ्यूचर वैल्यू टर्म्स में 1133 नंबर ऑफ यूनिट्स है ना अपने पास, कितने भाई? 51.801। सर बॉन्ड फ्रैक्शन में नहीं मिलते, मुझे मिले, तुमको क्या? अपने काम से काम रखो यार। 34.443 फर्स्ट पार्ट में से कितने पैसे मिले? 60,969.777। The first part of the tail, this one. $39,000 033.87 क्या रहा है टोटल? मालिक कितना आया? रुपीज 1,03.65, ₹3.65 मेरी एडवाइस की है। ठीक है चलिए, तो ये प्रूफ भी हो गया। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट इन ऑर्डर टू शो यू हाउ इट कैन बी डन piece by piece. We have taken the bond values, multiplied with the units so available at hand, right? So as simple as it gets. ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान काम था। हमेशा मैं बोलता हूँ यूनिट्स के साथ जाओ, वो इजी रहता है, क्लियर रहता है। तो
तो यूनिट्स में इसको बाइफिकेट कर दो, देन आपको पता है कि फेस वैल्यू के हिसाब से क्या पैसे बनने हैं, सब कुछ जस्ट मूव अहेड एज सिंपल एज इट गेट्स, राइट। चलिए तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सम की तरफ। दिस वाज, एक बार करा दो रन थ्रू, करा देते हैं 30 सेकेंड, ठीक है। एक बंदा है, पर्सन रिक्वायर्स 1 लाख रुपये एट द एंड ऑफ 2 years, his 2 bonds at hand, none of them have a duration which matches his, you can say, investment time horizon, hence we have to first check out the duration, right, and then conclude that, though I knew it beforehand, so then conclude that these guys, this guy over here needs to put both the bonds together in order to ensure that the duration of the bond matches with his investment time horizon. So he does that, and finally we figure out in what portion investment needs to be done, right. Amount of investment to be done today is nothing but the present value at the current market interest rate. You pull it back and figure out the present value of what? The amount that you want at the end of such period. So 1 lakh required at the end of 2 years at 10% is now nothing but 82,644.63 amount of investment required. Amount to be invested in bond X, we figured it out, divided by the price, and which gives us roughly 52 units, and amount to be invested in bond X and Y. Sorry, Y में कितना आया? 34 units, right. Then I just showed you a nifty proof, right, in short, as to how we'll get 1 lakh as we did in other cases as well, when the amount that we wanted to get back after a certain period of time we were able to get it. या कोई रेट फ्लक्चुएशन कुछ नहीं है, तो क्या, तो एकदम सीधा सीधा पीसफुल सम है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए